दोस्तों बात करते हैं फिल्म तारा रामपम की, जो कि रिलीज़ हुई थी 2007 में। जनर की बात की जाए तो स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म का जनर रहा है। ओपन अप हुई थी, काफ़ी पॉजिटिव रिव्यूज़ बोला जा सकता है, मिक्स्ड रिव्यूज़ रहे, पॉजिटिव नहीं। मिक्स्ड रिव्यूज़ होने के बावजूद भी हिट फिल्म साबित हुई है बॉक्स ऑफिस पे, और साथ ही साथ वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म भी रही 2007 की। मिक्स्ड रिव्यूज़ जिसमें कि परफॉर्मेंस को प्रेज़ मिला, बट क्रिटिसाइज भी करा गया था फॉर पेसिंग। मोर ओवर टू दिस, फिल्म में नज़र आए थे सैफ अली खान, रानी मुखर्जी, एंजेलिना इदनानी, अली हाजी एंड जावेद जाफरी। तो वहीं सेकंड टाइम रहा था लीड पेयर जिन्होंने साथ में काम करा था after the success of the last film that was हम तुम in 2004। डायरेक्शन की बात की जाए तो फिल्म डायरेक्ट करी गई थी बाय सिद्धार्थ आनंद, who directed Salam Namaste in 2005 and also starring Khan, and also wrote हम तुम for him। Whereas फिल्म की प्लॉटिंग की बात करें तो फिल्म रिवॉल्व अराउंड करती है एक रेस ट्रैक पे इन न्यूयॉर्क सिटी। एंड इंडियन वुमेन राधिका बैनर्जी सिंह यानी कि रानी मुखर्जी एंड हर किड्स चैम्प यानी कि अली हाजी एंड प्रिंसेस एंजेलिना इडनानी आर लीडिंग द चीयरिंग ऑफ आरवी यानी कि सैफ अली खान तो वही मोस्ट पॉपुलर रेसर रहे फिल्म में। Princess narrates the story in a flashback where Rajveer Singh works as part of the pit crew on racing track, and he is reckless and also fun-loving with an immense passion for racing and dreams of making it big. After being discovered by his manager Harry yani ki Javed Jafri by speeding a taxi to work, he meets Radhika Shekhar Rai Banerjee and instantly falls for her. Harry recruits Rajveer into Speeding Saddles, a struggling race team, and gives him the nickname RV. And also, he wins his first race and develops a streak, making him famous, wealthy. Over the months, Rajveer and Radhika's innocent love blossoms into a serious relationship. Whereas Radhika is a talented pianist majoring in music at Columbia University, whereas Rajveer has no degree or any educational background due to dropping out of school after his parents died. This earns him the disapproval of Radhika's father, wealthy businessman Shubho Shekhar Rai Banerjee yani ki Victor Banerjee. However, Radhika leaves her father and marries RV, abandoning her degree and taking on a position as a wealthy housewife, and also starts going by the name Shona. Where Rajveer and Shona go on to have two children that were Priya, also known as Princess, and Ranveer, known as Champ. Luck follows RV and he is soon proclaimed the number one racer car driver in America. Years later, the race, RV's jealous rival Rusty Finkelstein crashes his car into RV's, where RV is severely injured and hospitalized for months. A year later, once he recovers, he heads straight back to racetrack but begins suffering PTSD from his crash out of fear of getting hurt again. Where his old accident haunts him to his nerves and he comes last in every race onwards. Where Billy Bhatia yani ki Bharat Dabholkar, the manager of RV's team, fires him and hires Rusty instead. RV suggests he and Harry form a new team together, but Harry reluctantly refuses due to the necessity of his job and obligations, along with the money he has to send to his family. And angry RV claims that he doesn't need Harry and can find some better
manager easily to may result out in the end of their friendship. Moreover, to a year later, the family is in a worsening state. Neither Arvi nor Shona can get hired for good paying work because of their lack of degrees, making them regret Shona's father's words. Arvi and Shona are left unable to pay their loans and bills, and thus everything they own in their house is auctioned. Prince and Champ are not told much but start to worry that they are becoming poor. RV covers up the truth by telling them they are actually on a reality show. Don't worry, be happy, briefly putting their worries to rest. With only about $2,000 left, RV or Ski family leave their big house and find a less expensive one, move कर जाते हैं into a one bedroom apartment and the children become worried again. Arvi और Shona insist करते हैं this is all part of the game and the kids believe them, continuing to go on to favorite school while their parents try to find jobs. Army spends time circling through or before trying to send their pet dog Bruno away out of frustration. Harry comes to meet Arvi and Shona the next day and brings Bruno back, where he offers Arvi his old job as a taxi driver. But Arvi thinks Harry is insulting him, which results in a heated argument between the two.
Days passes and Shona gets a job as a piano player while RV agrees to become a taxi driver after much arguing. इस दौरान Princess overhears RV and Shona fighting and learns that they actually are in trouble with money and there's no reality show. While she reveals the situation to Champ and decides to take things into her own hands by saving up their lunch money while Princess manages to refrain from eating lunch every day, Champ begins to starve and he starts taking food from the garbage bin without his sister's knowledge and eats it outside of school on a bench where Princess makes Champ promise not to tell their parents, knowing they'll get upset. The family continues to support each other through their tough times or end up making new friends from their neighborhood. So when RV gets a customer who needs to get to the airport soon, he takes this chance to test his racing skills if they are still there. RV starts off doing great and moves at an elegant speed until he suffers flashback of his accident again. The customer is left furious and RV sadly realizes he may never race again because of his fear. During one of her piano jobs, Shona runs into her father who is disappointed to see her current state. Shubo offers her a large check of money and states he would have looked after Shona and her children, even helped RV getting a racing job if she had just asked. However, Shona rejects her father's money when he insults RV. Later, in a desperate attempt to pay his children's school fee, RV lies to his new friends and fellow cab drivers that Princess has pneumonia, prompting them to pool $1,000 together. When Shona finds out, she is furious and argues with RV in front of their children, and suddenly Champ falls unconscious and begins bleeding from his mouth. When RV, Shona, and Princess rush him to the hospital, where Princess tells her parents about their plan, which Champ followed. डॉक्टर रिवील करता है टू आरवी और शोना को दैट चैम्प हैज़ अ पीस ऑफ ग्लास इन his stomach from eating something and they need $65,000 for his surgery with only 2 days to get the money. RV decides to enter a race of his son's sake. Harry learns about Champ's condition and reconciles with RV. Together they set up their own race team made up of RV's taxi friends who forgave him for lying. RV encounters Rusty and starts remembering his horrific accident, but realizes that he is even more terrified of losing Champ and than he is of accident. This motivates him and he wins the most tense race of his career while apparently killing Rusty by wrecking his car the same way Rusty did to him previously. Champ's operation is successful, recover कर जाता है तो वहीं in the end RV returns to racing, Shona completes her music degree and finally shifts back home, though often visits their friends from their former neighborhood. RV still struggles to let go of his habits of taking loans and repaying them on installment basis. Champ और Princess return करते हैं स्कूल की तरफ where the former keeps boasting about his surgical scar and how आर्मी defeated Rusty. काफ़ी जो है इंटरेस्टिंग स्टोरी रही है फिल्म की, अप एंड डाउन भी रही हैं और बखूबी हैंडल करा है हर सिचुएशन को। तो वहीं बात की जाए फिल्म के रिस्पांस की एट द बॉक्स ऑफिस, तो ओपन अप हुई थी एवरेज रिस्पांस के साथ सिनेमाज में एंड कलेक्शन रहा था बिलो 50% का। हाउएवर द फिल्म सॉ अ गुड ओपनिंग ऑफ 90 to 95% इन द बिग सिटीज़ जैसे कि मुंबई, दिल्ली एंड केटरिंग टू द किड्स एंड फैमिली ऑडियंसेस। तो वहीं स्मॉल सिनेमाज ने रिसीव करा था एवरेज रिस्पांस में सच एज 50 to 70% का।
दो फिल्म ओपन टू एन एवरेज रिस्पॉन्स नेक्स्ट 2 डेज जो है हाई जंप के रहे कलेक्शन में पावर पैक रहा था। तो वहीं रिलीज ऑफ स्पाइडरमैन 3 caused a drop in collections, but the film has continued to do well in Mumbai and Delhi। नाइन्थ हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म रही थी 2007 की with the box office figures of 362 millions। एंड मोर ओवर रिसेप्शन की बात की जाए तो रॉटन टोमेटोज ने फिल्म को अप्रूवल रेटिंग दी थी 50% जो कि बेस्ड थी 8 क्रिटिक्स रिव्यूज़ पर। तो वहीं तरण आदर्श जो कि indiafm.com से थे उन्होंने फिल्म को रेटिंग दी थी 3.5 की आउट ऑफ 5 बाय praised the performance of Khan and Mukherjee, saying Khan is extremely likable and he conveys the varied emotions with complete understanding। तो वहीं मुखर्जी enacts the role of the mother wife proficiently और साथ ही साथ इंस्पायर्ड रही थी फिल्म बाय डेज ऑफ थंडर से जो कि 1990 में रिलीज हुई थी एंड Talladega Nights, The Ballad of Ricky Bobby 2006, though film critics that was Rajiv Masand pointed out that the pilot has been borrowed generously from films such as Cinderella Man, In America, Life is Beautiful जैसी फिल्म से अवार्ड विनिंग फिल्म रही जिसमें कि सबसे फेवरेट कॉन अवार्ड्स विन करा था रानी मुखर्जी ने। बात करते हैं फिल्म से जुड़े कुछ और फैक्ट सच एज म्यूज़िक की। तो म्यूज़िक जो कि कंडक्ट करा गया था बाय डुओ विशाल शेखर एंड जावेद अख्तर ने लिरिक्स लिखे थे एंड साउंड ट्रैक ऑफ द फिल्म कंटेन्स 7 सॉन्ग्स जैसे अकॉर्डिंग टू इंडियन ट्रेड वेबसाइट बॉक्स ऑफिस की तरफ साथ अराउंड 10 लाख यूनिट सोल्ड हुई थी। तो वहीं साउंड ट्रैक वॉज द ईयर्स 15th हाईएस्ट ग्रॉसिंग सेलिंग साउंड ट्रैक। Songs such as Up To Forever, Hey Shona, Tarampam version 1, Nachle Ve और Tarampam version Happy, Saiya Ve, Tarampam version 2 सॉन्ग्स रहे हिंदी में जिसके सिंगर्स रहे के विशाल ददलानी, श्रेया घोषाल, शान, सुनिधि चौहान, महालक्ष्मी अय्यर और सोनू निगम, सौम्या, राहु सिंगर्स रहे। तो वही तेलुगु साउंड ट्रैक भी रहा है फिल्म का विद अ सेम कुछ डिफरेंट रहे सच एज तारम्पम हैप्पी वर्जन, हे शोना और तारम्पम फीमेल वर्जन तो हिंदी के बराबर रहा वेयर एज डिफरेंट वर्ड चिंदोले, नाथो, फॉरएवर, विनू, कोरा जो कि डिफरेंट सॉन्ग्स रहे थे। बात करते हैं फिल्म के किरदारों की कास्टिंग की। तो सैफ अली खान जो कि किरदार निभा रहे थे फिल्म में आरवी यानी कि राजवीर सिंह का एक रेसर का। रानी मुखर्जी नज़र आई थी राधिका बनर्जी के किरदार में, रवि खोटे एज पांड्या, एंजेलिना इडनानी एज प्रिया सिंह, अली हाजी एज चैम्प, जावेद जाफरी एज हैरी, भरत दबोलकर एज बिल्ली भाटिया, सुजोय घोष एज छट्टो, रोनबीर लहरी एज पिंडी, विक्टर बैनर्जी एज शुभ शेखर राय, श्रुति सेठ एज साशा, डॉली बिंद्रा एज मिसेस पांड्या और केन थॉमसन रहे एज रस्टी फिंगलस्टन के किरदार में।
दोस्तों, other than stage shows and dancings, she is also involved in social and humanitarian work. So, when during her years in the film industry, Dikshit has been actively involved in promoting children's education and the safety of women. Featured in a series of 1 minute telespots on preventing AIDS for the Maharashtra State AIDS Control Society in 2000. The following May in 2001, she won 5 crores on कौन बनेगा करोड़पति जो कि गेम शो है that in its first season on the air. The amount she donated that won by her for the welfare of the victims of 2001 Gujarat earthquake and to an orphanage in Pune. In 2009 में she performed for the NDTV Toyota Greenathon, India's first ever nationwide campaign for saving the environment and creating awareness about environmental issues. जिसमें कि एनडीटीवी ने ऑर्गेनाइज करा था इंडियाज़ फर्स्ट 24 आवर लाइव टेलीथॉन a fundraising event that brings in people to donate money to support Terry's initiative Lighting a Billion Lives, which aims at providing solar power to villages without electricity. On 3rd February 2011, Dikshit spent an evening with 75 orphanage kids of farmers at an ashram in Trimbakeshwar and participated in the birthday of two children that were Rishikesh and Rani. Moreover to this, 2014 में she began working with UNICEF to advocate the rights of children and prevent child labor and child trafficking. Also participated in a fashion show organized by Leelavati Hospital to support the Save and Empower the Girl Child, जो कि initiative था by the organization. Same year, the government of Madhya Pradesh appointed her as a brand ambassador for its Mamta Abhiyan campaign, where she collaborated with Vogue for its Vogue Empower series on a short film on gender policing. Boys Don't Cry, जो कि डायरेक्ट करी गई थी by Vinil Matthew, and she was appointed as the brand ambassador for the campaign Beti Bachao Beti Padhao by the government of India 2015 में that aims to generate awareness and improve the efficiency of welfare services intended for girls. Moreover, she lent her voice for narrating the story of one of the 8 girls who featured in Girl Rising वो पढ़ेगी वो बढ़ेगी, a film on the education and empowerment of girls. Sifyeni was also appointed as the brand ambassador and launched Ma, that abbreviated with Mother's Absolute Affection, a flagship program to ensure adequate awareness is generated on the benefits of breastfeeding. Addition to it, she has made public appearances to support charities and causes. 4th Feb 2012 में she interacted with cancer affected children on World Cancer Day, जो कि ऑर्गेनाइज करा गया था बाय पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड एट जुहू मुंबई की तरफ से. तो वहीं 2013 में she launched Sanofi India's campaign on World Diabetes Day that encourages people to take proactive steps to effectively prevent, manage and control diabetes. A year later, on 24th Feb 2014, she visited a school in Andheri, Mumbai to support the campaign था Support My School, and also participated in Set Beautiful Free, an event by One Foundation to provide home, education, food and healthcare to the daughters of trafficking victims. तो वहीं 2018 में शी अटेंडेड अ चैरिटी इवेंट बाय नन्ही कली, जो कि एनजीओ की तरफ से था, एंड फॉल्स रिप्रेजेंटेशन भी रही है एंडोर्समेंट्स में, सच एज मई जून 2015 में तमिलनाडु कंज्यूमर्स फोरम
sent her notices for false representation in advertisements of Maggie, जो कि एक नूडल ब्रांड थी, when in which toxic levels of lead were found. She continued endorsing the safety of the product on Twitter even when food regulator had already found more than 17 times the permissible limits of lead and the product was banned. Other than this, म्यूजिक में भी उनका कंट्रीब्यूशन रहा है, जैसे कि he has sung small portions in a few songs from a film like काहे छेड़े from देवदास एंड सोनिए मिर्जा from आजा नचले, जो कि कंपोज करा गया था बाय मिर्जू महाराज जी एंड सलीम सुलेमान की तरफ से रिस्पेक्टिवली. And for her 2014 film Gulab Gang, Dikshit sang the traditional folk song Rangi Sari Gulabi Chunariya alongside her mother Snehlata Dikshit and composed also recreated for the film by its director Somik Sen. Dikshit made her official singing debut in 2020 with an English single Candle dedicating it to frontline workers fighting the COVID-19 pandemic. तो वहीं उनकी कुछ एक्लॉर्ड्स की बात की जाए तो शी हैज़ रिसीव्ड 6 फिल्म फेयर अवार्ड्स फ्रॉम द 17 नॉमिनेशंस, जिसमें की कैटेगरी रही थी बेस्ट एक्ट्रेस की फॉर द फिल्म दिल, बेटा, हम आपके हैं कौन एंड दिल तो पागल है, एंड ऑल्सो फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस for her performance in the movie Devdas. She earned a Filmfare Special Award for completing 25 years in the Indian film industry and 2008 में अवॉर्डी रह चुकी हैं पद्मश्री अवार्ड से, जो कि नवाजा गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से फॉर हर कंट्रीब्यूशन टू द आर्ट्स. दोस्तों, ये तो था फिल्म के जो लीड एक्टर्स थे उनसे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स. जानेंगे मकरंद देशपांडे के बारे में, जिन्होंने फिल्म में निभाया था शर्ली यानी कि माधुरी दीक्षित के भाई का किरदार. ही इज़ एन इंडियन फिल्म एक्टर, ऑल्सो राइटर एंड डायरेक्टर इन हिंदी, तमिल, कन्नड़, मराठी, तेलुगु, मलयालम cinema and Indian theatre. Often seen in supporting and pivotal roles in various films like जंगल, सरफरोश, मकड़ी, बुढ़ा होगा तेरा बाप, डरना जरूरी है, स्वदेश, where he often plays drunkard, wayfarer and comic roles, and also directed over 5 films in a career. Moreover to this, his contribution to the theatre industry includes over 50 short plays and 40 full-length plays, जिसमें की रहे सर सरला, जोक, माँ in Transit, Krishna Kidding and many more. His recent plays like पत्नी and नीलाद्री कुमार, जो कि अक्रॉस हिट रहे हैं, यानी कि कंट्री अक्रॉस हिट रहे हैं. His journey in theatre started in the year 1990 at Prithvi Theatre with support from Sanjana Kapoor and started Ansh Theatre Group in the year 1993 along with K.K. Menon, who remains one of the pillars of the group. तो वही मकरंद देशपांडे to be seen in upcoming romantic sports movies like लिगर, जो कि डायरेक्ट करी जाएगी बाय पुरी जगन्नाथ की तरफ से, and movie features विजय देवरकोंडा, अनन्या पांडे, राम्या कृष्णन एंड रोनित रॉय. टेलीविज़न पे भी उनका कंट्रीब्यूशन रहा है इन द शोज लाइक सर्कस, देवता एज सूरज, फिल्मी चक्कर एज पापा नाटेकर, वक्त की रफ्तार, सैलाब, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, सारा भाई वर्सेस सारा भाई, विक्रम बेताल की रहस्य गाथा एंड महाशास्त्रचा सुपरस्टार 2 में एज जज देखे गए हैं. वेब सीरीज रही सच एज इनसाइड एज ऑन अमेजॉन प्राइम वीडियो पर, मोदी जर्नी ऑफ अ कॉमन मैन
On Eros Now, The Direct Verdict, State versus Nanavati on Z5 and ALT बालाजी पर देखा गया। 100 ऑन हॉटस्टार रहा। तो वहीं एज अ ज्यूरी भी रहे थे ऑन मराठी रियलिटी टीवी शो मराठी बॉल पढ़ाते पूरे अलॉन्ग विद उर्मिला मातोडकर। अवार्ड्स की बात की जाए तो अवार्ड विनर रहे थे इन साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड्स में इन द कैटेगरी ऑफ बेस्ट एक्टर इन अ नेगेटिव रोल फॉर दांदू बाल्या एंड नंबर 66 मधुरा बस के लिए। हालांकि काफ़ी लिमिटेड उनका करियर रहा है इन द फिल्म इंडस्ट्री, बट जो भी रहा है वो उन्होंने अपना बेस्ट दिया है और नोटेबल भी रहा है फिल्म इंडस्ट्री में। बात की जाए साई देओधर की, जो कि नज़र आए थे एज चीकू यानी कि किरण के बेटे के किरदार में, जो कि एक इंडियन टेलीविज़न एक्टर हैं और बेसिकली देखे गए हैं टेलीविज़न सोप ओपेराज जो कि काफ़ी पॉपुलर रही हैं, जैसे कि सारा आकाश, एक लड़की अनजानी सी, एंड रिसेंटली शी हैज़ अपीयर्ड इन काशी अब न तेरा कागज़ कोरा एंड ऑन NDTV इमेजिन पर, where she played the role of mother of a 6-year-old girl and is also busy in shooting of an unnamed film to be produced by her husband Shakti Anand. Appeared in her first role as a child artist in 1993 Marathi movie Lapandav, where she played a mischievous young sister of the protagonist who kicks off comedy of errors that unfolds in the film. Moreover to this, उनके करियर की कुछ फिल्म्स रहीं जैसे कि सारा आकाश, सिद्धांत नज़र आई थी। अदर देन दिस नच बलिए सीज़न 1 में, CID, रेट, कसौटी ज़िंदगी की, काव्यांजलि, कहानी घर घर की, जीना इसी का नाम है, एक लड़की अनजानी सी, डॉन, बात हमारी बाकी है, किचन चैंपियन 5, सावधान इंडिया, डर सबको लगता है, दिल की बातें दिल ही जाने, उड़ान, अदालत एंड सम मोर वर पार्ट ऑफ her करियर, सम शोज वर पार्ट ऑफ her करियर। तो वही नज़र आई थी लिमिटेड फिल्म्स में सच एज प्रहर, घर, औंधा, मोगरा, फुलाला, लपनदेव। तो वहीं एज अ डायरेक्टर रही फॉर द फिल्म्स लाइक डेट, साइलेंट टाइज, फादर्स डे टू यू जो कि एक पॉकेट फिल्म रही थी, ब्लड रिलेशन, व्हेन अ मैन लव्स अ वुमन, बधाई हो, झूठी झूठी, बाटियाँ जो कि म्यूज़िक वीडियो थी। तो वहीं एज अ प्रोड्यूसर रही हैं फॉर द फिल्म्स शोज़ लाइक मुझसे कुछ कहती है ये खामोशियाँ जो कि स्टार हुआ था स्टार प्लस पर, यानी कि ऑन एयर रहा था स्टार प्लस पर। द शोरे गर्ल, ब्लड रिलेशन, बधाई हो, वर्शिप द वुमेन विद इन एंड फ्यू मोर वर पार्ट ऑफ अ करियर। तो वहीं शिव कुमार सुब्रमण्यम जो कि फिल्म में नज़र आए थे एज लेफ्टिनेंट खानदागड़े, जो कि मराठा लाइट इन्फेंट्री में उनका किरदार देखा गया था, इज़ एन इंडियन एक्टर एंड ऑल्सो अ स्क्रीन राइटर who is known for his role as a leading industrial tycoon I am Virani in the Indian television serial मुक्ति बंधन जो कि स्टार हुआ था कलर्स चैनल पर, and he is credited for writing the screenplay for the 1989 फिल्म परिंदा जो कि डायरेक्ट करी गई थी बाय विधु विनोद चोपड़ा की तरफ से, एंड फॉर द 2005 फिल्म हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी which was directed by Sudhir Mishra, and he also appeared in supporting roles in both the films. तो वही फिल्म्स की बात की जाए उनके करियर की, जिसमें कि नज़र आए थे एज एन एक्टर वर मीनाक्षी सुंदरेश्वर, नील पॉलिश, तू है मेरा संडे, लाखों में एक, हिचकी, रॉकी हैंडसम, उंगली, रहस्य,
हैप्पी जर्नी, टू स्ट्रेट्स, किस्मत, स्टैनली का डब्बा, एक दिन 24 घंटे, तीन पत्ती, रिस्क, ध्रुव काल, रक्षक, बॉम्बे बॉयज, एंड एज अ स्क्रीन राइटर रहे फॉर द फिल्म्स लाइक तीन पत्ती, हजारों ख्वाहिशें ऐसी, चमेली, अर्जुन पंडित, इस रात की सुबह नहीं, एंड एज अ असिस्टेंट डायरेक्टर रहे थे फॉर द फिल्म परिंदा। परिंदा में एज अ स्क्रीन राइटर, डायरेक्टर एंड एज एन एक्टर भी रहे हैं। आई थिंक कहा जा सकता है उनके करियर की पहली ऐसी फिल्म थी जिसमें उन्होंने ये सभी किरदार निभाए थे। तो वहीं अवार्ड्स की बात की जाए तो अवार्ड विनर रहे फॉर फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट स्टोरी फॉर हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी, जो कि उन्होंने शेयर करा था विद सुधीर मिश्रा और रुचि नारायण के साथ। Whereas for Parinda, he won the Filmfare Award for Best Screenplay. अदर देन दिस बढ़ते हैं फिल्म के अगले किरदार की तरफ, जो कि थे अच्युत पॉडर, जो कि शर्ली यानी कि माधुरी दीक्षित के पिता का किरदार निभाया था उन्होंने फिल्म में। Is an Indian actor who has worked in over 125 Bollywood films and addition to the films has appeared in 95 serials, 26 plays and 45 ads में देखे गए हैं। करियर की बात की जाए तो आफ्टर यूनिवर्सिटी ही बिकेम अ प्रोफेसर एट रेवा एमपी में and later joined the Indian Army, from which he retired as a captain in 1967. Later on, he worked with Indian Oil as an executive for a period of nearly 25 years and retired at the age of 58 in 1992. Would participate in theatrical ventures and plays, is working in Indian Oil and would host their cultural events, and was well known for his character roles in Bollywood. Enter करोने इंडस्ट्री में at the age of 44 while coming from an army background and having spent years in a corporate world. He pursued acting as a serious hobby, never went to ask for roles, and did only those who that came his way. He is almost a fixed character in Vidhu Vinod Chopra's films, जिसमें कि उनकी कुछ लेटेस्ट फिल्म्स रहती हैं सच एज रही हैं दबंग 2, फरारी की सवारी, 3 इडियट्स, एंड रिसेंटली ही इज प्लेइंग अ कैरेक्टर इन द सीरियल अमिता का अमित, जो कि देखा गया था सोनी एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड पर। Whereas he also portrayed Jay Prakash Narayan on the television series of Pradhan Mantri in the character of Aaj Tak on Andolan. अचीवमेंट्स और अवार्ड्स की बात की जाए तो ऑन संडे 16 अगस्त 2015 में सनंद अ कल्चरल ग्रुप इन इंदौर ने फैसिलिटेट करा था उन्हें विद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड for his glorious career, marking several decades in Bollywood and remarkable contribution to the field of art. Also received Zee Marathi Jeevan Gaurav Puraskar in 2021 for playing the role of Apa in the television serial Majha Hoshilna. कुछ उनके टेलीविजन वर्क्स भी रहे सच एज भारत एक खोज, प्रधानमंत्री, शुभ मंगल, सावधान, अमित का अमित, ऑल द बेस्ट, मिसेस तेंदुलकर, वागले की दुनिया, ये दुनिया गजब की। तो वही फिल्म्स की बात की जाए तो दैट वर हौसला, 21 तोपों की सलामी, दबंग 2, एक तो चांस, कर्ज, भूतनाथ, देव, कयामत, धुंध, दिल है तुम्हारा, गैर, हम साथ साथ हैं, वास्तव द रियलिटी, यशवंत, इंसाफ, इश्क, उड़ान, अग्नि साक्षी, गुंडाराज, दिलवाले, हस्ती, हमला, नरसिम्हा, दिशा, तेजाब, विजेता, किड,
अर्ध सत्य। एल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है? आक्रोश वर द पार्ट ऑफ हिज करियर। तो वहीं दोस्तों बढ़ते हैं फिल्म के म्यूज़िक की तरफ, जानेंगे फिल्म के म्यूज़िक के बारे में। कंपोजिशन रही थी फिल्म में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी की, तो वहीं लिरिक्स लिखे गए थे बाय मंगेश कुलकर्णी। द सॉन्ग्स वर धड़कन ज़रा रुक गई है, जिसके सिंगर रहे थे सुरेश वाडकर। हमारी ही मुट्ठी में was sung by Manna Dey, and the version 2 was sung by Kavita Krishnamurti. And also the sad part was sung by Manna Dey, and the song Yaad Piya Ki Aaye was sung by शोभा गुरतू। फिल्म की बात की जाए दोस्तों, फिल्म जो है काफ़ी पसंद करी गई थी। हालांकि 37th फिल्म फेयर अवार्ड्स में भी नॉमिनेट करी गई थी, बावजूद इसके कुछ मिक्स रिव्यूज़ भी गेन करे हैं, तो बल्कि क्रिटिक्स की तरफ से काफ़ी पॉजिटिव रिव्यूज़ गेन करे हैं फॉर द स्टोरी। दोस्तों बात की जाए 1970s के दौर की, तो 1971 में ही एक्टेड इन हाथी मेरे साथी, जो कि काफ़ी हिट फिल्म रही थी, साथ ही साथ हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म भी रही है एंड द बिगेस्ट ग्रॉसर एवर टिल देन, where he is credited with giving Salim Khan and Javed Akhtar their first chance to become screenplay writers by offering them work in Hathi Mere Sathi. Javed Akhtar accepted and said in an interview one day he went to Salim Saab and said that Mr. Devar had given him a huge singing amount with which he could complete the payment for his bungalow, जो कि आशीर्वाद है, whereas but the film's script was far from being satisfactory. He told us that if we could write the script, he would make sure we got both money and credit. Whereas Rajesh bought Rajendra Kumar's bungalow named Dimple in Carter Road Promenade for 31 lakh in 1970s, तो उसका ही रीनेम करा था, जो कि रखा गया था आशीर्वाद। राजेश खन्ना's 15 consecutive solo hit films रही हैं between 1969 to 70,
जिसमें कि कुछ फिल्म्स रही जैसे आराधना, डोली, बंधन, इत्तेफाक, दो रास्ते, सफ़र, खामोशी, द ट्रेन, कटी पतंग, सच्चा झूठा, आन मिलो सजना, महबूब की मेहंदी, छोटी बहू, आनंद एंड हाथी मेरे साथी उनकी सोलो हिट्स रही हैं। तो वहीं 17 कॉन्जिक्यूटिव हिट फिल्म्स रही जिसमें कि लीड हीरो रहे हैं बतौर, जो कि सेम एरा था उनका 1969 टू 71, जिसमें कि 15 में तो उन्होंने सोलो हीरो फिल्म्स करी हैं, बल्कि 2 नॉन सोलो हीरो फिल्म्स रही जो कि थी अंदाज और मर्यादा। तो वहीं बदनाम फरिश्ते जो कि 1971 में उनकी अनसक्सेसफुल रही बॉक्स ऑफिस पे, जबकि 72 में ही एक्टेड इन 11 रिलीजेस जिसमें कि तेलुगु फिल्म बंगारू बाबू, दैट ईयर हिज फिल्म्स अमर प्रेम, अपना देश, मेरे जीवन साथी जिन्होंने अर्न करा था मिलकर 5 करोड़। तो वहीं हिज अदर फिल्म्स ऑफ 1972 सच एज दिल दौलत दुनिया, बावर्ची, जोरू का गुलाम, शहजादा ने काफ़ी अच्छा अर्न करा था, 4.5 करोड़ से भी ज़्यादा। तो वहीं उनकी कुछ नेक्स्ट रिलीजेस रहीं जैसे कि अनुराग जो कि हिट रही थी, द फिल्म मालिक रिलीज्ड इन द एंड ऑफ 1972 बट अनसक्सेसफुल रही बॉक्स ऑफिस पे। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने गेस्ट अपीयरेंस भी दिया था तेलुगु मूवी जिसका टाइटल था बंगारू बाबू, directed by V.B. Rajendra Prasad in 1973 and also was hit at the box office। बात की जाए जो कि एज पर रिव्यू रहे हैं राजा रानी के, written in 2014 by the Hindu newspaper, the film did well at box office and taking into consideration the inflation as of 2014, the film would have grossed more than 100 crores, जो कि अटायर पहना गया था by खन्ना was a sleeveless shirt and trouser, thick leather belt, shoes without socks and a black cap, जिसको द हिंदू रिव्यू ने मेंशन करा on a lesser actor the attire would have fallen flat, but Khanna as a small time thief carries it with characteristic elan। काफ़ी अच्छा रिव्यू दिया गया एज पर कि मतलब जो उनकी कॉस्ट्यूम थी वो इतना जस्टिस नहीं कर रही थी उनके साथ। Whereas he acted alongside Mumtaz in 8 films and they were neighbors and got along very well, which translated onto the screen. Mumtaz also mentioned that I would pull his leg and tease him about his fan following whenever Rajesh entered a hotel in Madras. There was a queue of 600 girls waiting to see him at midnight. As a result, even I would get some importance as people would ask for my autograph as well. He was very generous with his associates and would party a lot। काफ़ी generous nature रहा है राजेश खन्ना जी का। तो वहीं बात की जाए उनके पीक की जो कि करियर का एक पीक टाइम रहा, he would be mobbed during public appearances. Fans kissed his car, which would be covered with lipstick marks, and lined the road, cheering and chanting his name, whereas female fans sent him letters written in their blood. There used to be a line of cars of his producers and hysterical fans outside his bungalow every day. तो वहीं actor Mahmood parodied him in Bombay to Goa, where the driver and conductor of the bus were called Rajesh and Khanna respectively. Even today, he remains the favorite of mimicry artists who copy his trademark style and dialogue delivery. टिल डेट काफ़ी नोन है और काफ़ी उनकी जो डायलॉग डिलीवरी है कॉपीराइट से एक ट्रेडमार्क स्टाइल बन गया है इंडस्ट्री में। अमर प्रेम की फिल्मिंग के दौरान देयर वॉज अ सीन दैट नीडेड टू बी शॉट एट हावड़ा ब्रिज with a boat carrying Khanna and Sharmila under the bridge.
When the authorities ruled this scene out as they realized that if the public found that the star would be there, it may create a problems on the bridge and that it might collapse due to the number of people trying to get glimpse of their favorite actor. So when film critic Manojit Lahiri remembers girls married themselves to photographs of Rajesh Khanna. सिर्फ यही नहीं, cutting their fingers and applying the blood as sindoor, and Rajesh was God. There has never been such hysteria. मतलब उनका जो दौर था उस टाइम पे जो लड़कियां थी काफ़ी ज़्यादा पागल हुई रहती थी, उल्टी सीधी हरकतें करती थी, अपने हाथ काट के मांग भरना लाइक एक्टिविटीज़ करी हैं काफ़ी सारी लड़कियों ने, इनसेन एक्टिविटीज़. Other than this, 1973 में BBC also made a documentary on him named as Bombay Superstar. As a part of their Man Alive series, shooting began when he got married and his film Daag का premiere था. In the video, it can be noticed that Khanna was shooting for Aapki Kasam, whereas a textbook prescribed by the Mumbai University contained an essay, The Charisma of Rajesh Khanna. During that, Sharmila Tagore said in an interview with the Indian Express that women came out in droves to see Kaka, as they would stand in queues outside the studios to catch a glimpse. They would marry his photographs, they would pull at his clothes. Delhi girls were crazier for him than Mumbai girls. He needed police protection when he was in public. I have never seen anything like this before or since. जैसे उनके कमेंट्स रहे हैं, यहाँ तक कि जो उनकी को एक्ट्रेसेस रही हैं उन तक के कमेंट्स रहे हैं कि जो दिल्ली गर्ल्स थी वो काफ़ी ज़्यादा क्रेजी थी मुंबई से. Many of the musical scores for Rajesh Khanna's film were composed by Lakshmikant Pyarelal-ji, Sachin Dev Burman and R.D. Burman. The trio of Rajesh Khanna, Kishore Kumar and R.D. Burman went on to make number of popular films जिसमें की रही अलग अलग, कटी पतंग, अमर प्रेम, शहजादा, मेरे जवान साथी, अपना देश, आपकी कसम, नमक हराम, अजनबी, माहचोर, कर्म, फिर वही रात, कुदरत, अशांति, अगर तुम ना होते, हम दोनों, आवाज़ उनकी कुछ फिल्म्स रही हैं जिसमें कि इन तीनों का ट्रायो देखा गया है. Whereas Rajesh Khanna considered Guru Dutt, Meena Kumari and Geeta Bali to be his idols and said in an interview, my inspiration include Dilip Kumar's dedication and intensity and Raj Kapoor's spontaneity, where Devanand's style and Shami Kapoor's rhythm. इसके बाद 1976 to 78 इन 3 सालों में he acted in 7 films that were not commercially successful, but these films includes Mehbooba, बंडल बाज, त्याग, पलकों की छाँव में, नौकरी, चक्रव्यूह, जनता हवलदार, which were directed by Shakti Samanta, Shami Kapoor, Deen Dayal Sharma, Miraj, Rishikesh Mukherjee, Basu Chatterjee and Mahmood Ali respectively, where Khanna persuaded Samanta to cast his sister-in-law Dimple Kapadia opposite him in Anurodh, whereas film starring Rajesh Khanna and directed Shakti Samanta tended to be commercially successful. तो वही महबूबा जो कि एक exception रहा. The change from romantic and social movies to action-oriented multi-stars caused some decline of Khanna's career in terms of box office rating. The declaration of emergency in India had injured the masses, and this helped
films having the lead actor revolting against corruption to become successes. तो वहीं एक्टर जॉय मुखर्जी made छलिया बाबू a suspense thriller in 1977 which became the only successful film of his as a director. And the unexpected success of Chaliya Babu gave a boost to the career of Khanna. However, Khanna continued basically in solo hero, socially sober household meaningful films during this era और काफ़ी सारी वैरायटी ऑफ कैरेक्टर्स प्ले करे हैं उन्होंने फिल्म्स में वेरियस जनर्स की. इस फेज के दौरान ही हैड बॉक्स ऑफिस हिट्स ऑल्सो लाइक महाचोर, भोला भाला, कर्ण, टिंकू, अनुरोध. तो वहीं खन्ना वॉज द फर्स्ट चॉइस ऑफ डायरेक्टर राज कपूर फॉर द लीड रोल इन सत्यम शिवम सुंदरम. बट कुछ मेंबर्स थे फ्रॉम द राज कपूर कैंप जो अपोज थे खन्ना के टू बीइंग इन द लीड, स्पेशली ऋषि कपूर. द रोल वेंट ऑन टू शशि कपूर. 80s के दौर में when after the 1978 he starred in films like अमरदीप, फिर वही रात, बंदिश, थोड़ी सी बेवफाई, कुदरत, दर्द, धनवान, अशांति, अवतार, अगर तुम ना होते, सौतन, जानवर, आशा ज्योति, नया कदम, बाबू, आज का एमएलए, राम अवतार, शत्रु, इंसाफ, मैं करूँगा एंड सम मोर फिल्म्स. तो वहीं डायरेक्टर भारती राजा decided to remake his 1978 Tamil box office hit film Sigappu Rojakal in Hindi with Khanna playing a psychopath. When Kamal Hassan, who played the same role in Tamil, won South Filmfare Best Actor Award for his portrayal, but the Hindi film Red Rose of 1980 was seen as controversial by traditional and orthodox Hindi moviegoers and was not a commercial success. Tina Muneem and Rajesh Khanna became an on and off screen couple of the 80s with movies such as 50-50, Surag, आखिर क्यों, सौतन, इंसाफ मैं करूँगा, अधिकार, अलग अलग. And Ram Avatar Agnihotri wrote that Tina Muneem showed the first sparks of the dedicated actress she would become in the films such as अलग अलग and अधिकार दोनों ही उन्होंने करी थी राजेश खन्ना के साथ. Whereas his on-screen pairing with Shabana Azmi, Smita Patel, पद्मिनी कोल्हापुरे एंड पूनम ढिल्लन काफ़ी पॉपुलर पेयर अप रहा है 80s का. सिर्फ यही नहीं, उन्होंने एक्टिंग भी करी है, मतलब मराठी फिल्म इंडस्ट्री में भी उन्होंने एक्टिंग करी है विद द मराठी हिट फिल्म सच एज सुंदरा सतर्कर इन 1981. Kamal Hassan was a close friend of Khanna and starred in Hindi remakes of 3 Tamil films originally starring Kamal, and the Kamal acted in 2 remakes of Khanna's films. Quoted in an interview to narrate how he experienced Khanna's stardom in an accident in 1985, where he probably hadn't been to a public theatre since he became a star. Moreover, he performed in successful multi-starrer films including Rajput, धर्म और कानून, पापी पेट का सवाल है, दिल नादान, घर का चिराग, ज़माना. He did 3 movies with Jitendra that were धर्म काटा, निशान and मकसद. तो वहीं 84 की मकसद was the second highest ranked film in terms of box office results
Earning gross 8.5 crores in आज का MLA Ram Avatar, where Khanna played the character of corrupt politician. Viewers praised his role in the film. That was in 1985. He produced Alag Alag. Moreover, he worked in films of different genres जैसे कि tragedy film रही बाबू as a rickshaw puller, thriller film Red Rose में as a psychopath, political adventure in Awam, fantasy in Bundalbaz and Janwar, crime in फिर वही रात है and अंगारे, suspense in चक्रव्यूह and इत्तेफाक, कॉमेडी इन जोरू का गुलाम, बावर्ची, हम दोनों and मास्टर जी, एक्शन इन अशांति and ज़माना, family dramas addressing different issues in आंचल, अमृत, अगर तुम न होते, and films addressing issues and social concerns that were अवतार, नया कदम आखिर क्यों। काफ़ी उन्होंने डिफरेंट कैरेक्टर्स अपनाए हैं, हर जेनर में उन्होंने अपने टाइम पे काम किया है और बखूबी हर किरदार को भी निभाया है। मोर ओवर दैन दिस, actors who went part of the cast of most of his films include Madan Puri, Ashok Kumar, Sujit Kumar, Prem Chopra, Azrani, Bindu, Vijay Arora, Rupesh Kumar, Deena Pathak and A.K. Hangal, who remained part of his working team from the start until the late 80s. The lyricist whom he preferred for his movies was Anand Bakshi. तो वहीं फिल्म्स बाय शक्ति समांता विद खन्ना जो कि लीड में रही, तो वहीं म्यूजिक बाय पंचम एंड लिरिक्स बाय आनंद बख्शी हैड पीपल्स वनिंग. The films Samantha directed without Khanna in the 80s were duds, whereas his other close friends from the film industry include Raj Babbar, J. Om Prakash, Prem Chopra, D. Ramanaidu, and Jitin. तो वहीं celebrities of the post-2000 era like Madhur Bhandarkar say that they take at least 3 or 4 turns in Carter Road at that time just to see Khanna. Moreover, actor Irfan Khan stated in an interview, the kind of craze witnessed by Rajesh Khanna has not been duplicated by anyone. He was the biggest and the most real star Bollywood has produced. I would say stardom is that feeling of being possessed by your idol. You are so overwhelmed with euphoria, you lose touch with reality. काफ़ी नाम रहा है, हालांकि एट प्रेजेंट जो एक्टर्स हैं वो तक राजेश खन्ना जी को अपना आइडल मानते हैं 90s और 80s के दौर में. मोर ओवर 80s का दौर जो था काफ़ी उनका नोन और मोर ओवर सक्सेसफुल देखा गया है. फिल्म इंडस्ट्री के एक जाने माने एक्टर तो हैं ही, इसी के साथ साथ अपने पीछे एक लीगेसी भी छोड़कर गए हैं. जस्ट एज द पीएम जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रतिभा पाटिल lamented the passing away of the actor. In a press release, she said, I am saddened to learn about the passing away of Rajesh Khanna in his prime. As an actor, he was a heartthrob of the young generation of 70s who tried to model themselves on him and his style. Many celebrities who paid homage to him after his death. His prayer meeting organized in a grand way at the Taj Lands and Hotel in Bandra, Mumbai on 21st July 2012 was attended by many. सिर्फ यही नहीं, काफ़ी celebrities who paid homage to him at his house after his death, जिसमें कि सारे ही ऑलमोस्ट फिल्म इंडस्ट्री के किरदार
देखे गए जस्ट लाइक मनोज कुमार, रंजीत, जितेंद्र, राकेश रोशन, रणधीर कपूर, आशा पारेख, यश चोपड़ा, ऋषि कपूर, शबाना आजमी, धर्मेंद्र, विनोद खन्ना, गोविंदा, सलमान खान, हेमा मालिनी, राम कपूर, महेश ठाकुर, हिमेश रेशमिया, साजिद खान, and his prayer meeting organized in a grand way at the Taj Lands End Hotel in Bandra, Mumbai, जिसमें कि नजर आए रीना रॉय, पद्मिनी कोल्हापुरे, पूनम ढिल्लन, नीतू कपूर, जया बच्चन, किरण राव, रणबीर कपूर, शक्ति कपूर, शशि कपूर एंड सम मोर। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, बल्कि उनकी एक पोस्टेज भी रिलीज़ करी गई थी बाय द इंडिया पोस्ट, जिसमें कि फीचरिंग खन्ना रहे हैं ऑन 3 मई 2013 को। On his first death anniversary, a bronze statue of Rajesh Khanna was unveiled at Bandra Bandstand, Mumbai में। चौक जो कि एक इंटरसेक्शन है इन गिरगांव has been named Superstar Rajesh Khanna Chowk in his memory। तो वहीं पार्क एट लाजपत नगर न्यू दिल्ली has been renamed as Superstar Rajesh Khanna Park in his memory। अवार्ड्स और नॉमिनेशंस की बात की जाए तो ही वॉन 7 ऑल इंडिया क्रिटिक एसोसिएशन बेस्ट एक्टर अवार्ड्स एंड रिसीव्ड 10 nominations. Also won 4 Best Actor awards in the Bengali Film Journalist Association Award and received 25 nominations. 3 Filmfare Best Actor Award and 1 Filmfare Special Guest Actor Award in 1973 and received a Filmfare Special Award in 1991 after 25 years in the Hindi film industry, whereas received the Filmfare Lifetime Achievement Award at the 50th anniversary of Filmfare Awards ceremony in 2005 and also the recipient of IFA Lifetime Achievement Award in 2009। अपने करियर में जो कि उन्होंने पूरा अपना करियर दिया था फिल्म इंडस्ट्री को, उन्होंने काफ़ी जो है एक लीगेसी भी छोड़ी है अपने साथ साथ। मोर ओवर काफ़ी नंबर ऑफ यानी कि काफ़ी सारे अवार्ड्स भी अपने नाम लिए हैं। बात की जाए फिल्म के अगले किरदार अक्षय खन्ना की यानी कि रोहन बलराज की, जो कि एक एक्टर हैं who appeared in Hindi films and he is the son of late Indian actor Vinod Khanna. He has also won numerous awards in his career जिसमें कि Filmfare, Screen Awards and IFA Awards हैं काफ़ी वेरियस कैटेगरी में। जानते हैं उनसे रिलेटेड कुछ और फैक्ट्स सच एज आफ्टर स्टडीइंग इन किशोर नामित Kapoor Acting Institute in Mumbai, he made his acting debut in 1997 with the film Himalaya Putra. His next release was Border in 1997, जो कि emerged हुई थी as a critical and commercial success, earning him the Filmfare Best Debut Award and a nomination for Filmfare Award for Best Supporting Actor, where he rose to prominence with starring roles in the musical romantic drama films like Tal in 1999, comedy film like Dil Chahta Hai in 2001, which won him her Filmfare Award for Best Supporting Actor, whereas the romantic thriller Hamraz of 2002, जिसके लिए नॉमिनेट करे गए थे बेस्ट नेगेटिव रोल कैटेगरी के लिए, and the romantic comedies Hangama and the Halchal of 2004, the murder mystery 36 Chinatown in 2006, and the action thriller Race in 8, and the heist comedy Tismar Khan in 2010. He has also acted in
2010 comedy movie No Problem, and he continued to draw praise for her performances in the 1999 romance film The Hick, the 2002 psychological thriller Divangi, or 2007 में biographical drama Gandhi, My Father, and the 2010 action thriller film Akrosh. Following a 4-year hiatus since his last release, Gali Gali Chor Hai, in 2012, Khanna made his comeback with an antagonistic appearance in the action comedy film Dishoom and appeared as an investigative cop in two thriller releases of 2017, the crime film Mom and the murder mystery Ittifaq. दोस्तों जानेंगे उनके करियर से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स, जस्ट एज कि डेब्यू, करियर स्ट्रगल और ब्रेक थ्रू पीरियड रहा उनका 1997 टू 1999, वेयर एज जिसमें कि उन्होंने डेब्यू करा था एक्टिंग करियर में विद पंकज पराशर्स रोमांटिक ड्रामा मूवी हिमालय पुत्र से, जिसमें कि को स्टारिंग रहे थे उनके फादर विनोद खन्ना अलॉन्ग विद हेमा मालिनी, सतीश शाह, जॉनी लिवर, डेनी डेंजोंगपा एंड अमरीश पुरी, जिसमें कि उनकी परफॉर्मेंस ने अर्न करा था उनके लिए स्क्रीन अवार्ड फॉर बेस्ट मेल डेब्यू, बट द फिल्म अंडर परफॉर्म्ड एट द बॉक्स ऑफिस बावजूद पॉजिटिव रिव्यूज़ के. Later that year, Khanna starred in J.P. Datta's war drama Border alongside Sunny Deol, Sunil Shetty and Jackie Shroff, set during the Indo-Pakistan War of 1971. The film was about the events of the Battle of Longwala and saw Khanna play the real-life role of Dharmveer Singh Maan, a commander who is also a part of the battle. The film generated positive reviews and eventually proved to be the second highest grossing Bollywood film of 1997. तो वहीं बॉर्डर won 4 Filmfare Awards, जिसमें कि रहा Best Male Debut Trophy for Khanna. He was also nominated for Best Supporting Actor at the same ceremony. उनकी final release of 1997 was the romance film Mohabbat, in which he starred alongside Madhuri Dixit and Sanjay Kapoor. Whereas the film received a negative critical reception and was commercially unsuccessful. Following years में Khanna starred opposite Jyotika and Priyadarshan's romantic drama film डोली सजा के रखना in 1998, जिसमें कि पोर्ट्रे करा था एक रिच पर्सन का who falls in love with ज्योतिका's कैरेक्टर. सिर्फ यही नहीं बल्कि ही उनकी कुछ स्टार रहे अपोजिट ऐश्वर्या राय एंड अनिल कपूर इन सुभाष घई's म्यूजिकल लव ट्रायंगल फिल्म ताल, इन विच ही प्लेड मानव मेहता, जो कि एक सन है ऑफ अ वेल्दी रिच मैन हु फॉल्स इन लव विद अ पुअर एस्पायरिंग सिंगर. फिल्म जो है हाईली एंटिसिपेटेड रही थी क्रिटिक्स की तरफ से और प्रूव हुई थी टू बी द थर्ड हाईएस्ट अर्निंग फीचर फिल्म ऑफ 1999, बिकमिंग हिज फर्स्ट कमर्शियल सक्सेस सिंस बॉर्डर. तो वहीं फाइनल फिल्म उस साल की वॉज लतीफ़ बिनू's star-crossed romance The Hick, in which he featured opposite Sonali Bendre as a Hindu boy who falls in love with a Muslim girl. The role was played by Sonali Bendre. हालांकि फिल्म बॉक्स ऑफिस पे डिसअपॉइंटमेंट के साथ देखी गई है. क्रिटिकल रिकॉग्निशन उन्हें मिली थी 2000 में, यानी कि 2001 और 2 में उन्हें मिला क्रिटिकल रिकॉग्निशन, जिसमें कि उन्होंने ब्रेक लिया था, यानी कि 2 साल तक एब्सेंस में रहे फ्रॉम द फुल टाइम एक्टिंग एंड अपीयर्ड इन फरहान अख्तर्स कमिंग ऑफ एज कॉमेडी ड्रामा फिल्म दिल चाहता है इन 2001 alongside सैफ अली खान एंड आमिर खान.
Set in Mumbai, it focuses on a major period of transition in the lives of three young friends, where Khanna featured as one of the friends named Siddharth Sinha, जो कि एक क्वाइट और रेटिसेंट बॉय था। तो वहीं अब्बास मस्तान रोमांटिक थ्रिलर मूवी हमराज इन 2002 co-starring Bobby Deol and Amisha Patel was Khanna's next film release, and he played the main antagonist Karan Malhotra, a convincing con artist whose girlfriend played by Patel marries a rich man जिसका किरदार निभाया था देओल ने to secure his wealth। तो वहीं बात की जाए प्रेज़ की, तो उनकी परफॉर्मेंस ने रिसीव करा था काफ़ी क्रिटिकल प्रेज एंड ही वॉन द आईफा अवार्ड फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस इन अ नेगेटिव रोल and nominations for the Filmfare Award for Best Performance in a Negative Role also for the film Humraz. And that year, he also starred as a lawyer in Anis Bazmi's thriller movie Diwangi alongside Ajay Devgan and Urmila Matondkar, जो कि फाइनेंशियल सक्सेस रही है, जिसमें कि नॉमिनेट हुए थे फॉर द स्क्रीन अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर। Arvi spends time circling through odd before trying to send their pet dog Bruno away out of frustration. Harry comes to meet Arvi and Shona the next day and brings Bruno back, where he offers Arvi his old job as a taxi driver. But Arvi thinks Harry is insulting him, which results in a heated argument between the two. Days passes and Shona gets a job as a piano player while Arvi agrees to become a taxi driver after much arguing. इस दौरान Princess overhears Arvi and Shona fighting and learns that they actually are in trouble with money and there's no reality show, while she reveals the situation to Champ and decides to take things into her own hands by saving up their lunch money. While Princess manages to refrain from eating lunch every day, Champ begins to starve, and he starts taking food from the garbage bin without his sister's knowledge and eats it outside of school on a bench, where Princess makes Champ promise not to tell their parents, knowing they'll get upset. The family continues to support each other through their tough times or end up making new friends from their neighborhood. So when RV gets a customer who needs to get to the airport soon, he takes this chance to test his racing skills if they are still there. RV starts off doing great and moves at an elegant speed until he suffers flashback of his accident again. The customer is left furious and RV sadly realizes he may never race again because of his fear. During one of her piano jobs, Shona runs into her father, who is disappointed to see her current state. Shubo offers her a large check of money and states he would have looked after Shona and her children, even helped Arvi getting a racing job if she had just asked. However, Shona rejects her father's money when he insults Arvi. Later, in a desperate attempt to pay his children's school fee, Arvi lies to his new friends and fellow cab drivers that Princess has pneumonia, prompting them to pool $1,000 together. When Shona finds out, she is furious and argues with Arvi in front of their children, and suddenly Champ falls unconscious and begins bleeding from his mouth. When Arvi, Shona, and Princess rush him to the hospital, where Princess tells her parents about their plan, which Champ followed. डॉक्टर रिवील करता है टू आरवी और शोना को दैट चैम्प हैज़ अ पीस ऑफ ग्लास इन हिज स्टमक from eating something and they need $65,000 for his surgery with only 2 days to get the money.
Arvi decides to enter a race of his son's sake. Harry learns about Champ's condition and reconciles with Arvi. Together they set up their own race team made up of Arvi's taxi friends who forgave him for lying. Arvi encounters Rusty and starts remembering his horrific accident, but realizes that he is even more terrified of losing Champ and than he is of accident. This motivates him and he wins the most tense race of his career while apparently killing Rusty by wrecking his car the same way Rusty did to him previously. Champ's operation is successful, recover कर जाता है तो वहीं in the end RV returns to racing, Shona completes her music degree and finally shifts back home, though often visits their friends from their former neighborhood. RV still struggles to let go of his habits of taking loans and repaying them on installment basis. Champ और Princess return करते हैं स्कूल की तरफ where the former keeps boasting about his surgical scar and how Army defeated Rusty. काफ़ी जो है इंटरेस्टिंग स्टोरी रही है फिल्म की, अप एंड डाउन भी रही हैं और बखूबी हैंडल करा है हर सिचुएशन को। तो वहीं बात की जाए फिल्म के रिस्पांस की एट द बॉक्स ऑफिस, तो ओपन अप हुई थी एवरेज रिस्पांस के साथ सिनेमाज में एंड कलेक्शन रहा था बिलो 50% का। हाउएवर द फिल्म सॉ अ गुड ओपनिंग ऑफ 90 to 95% इन द बिग सिटीज़ जैसे कि मुंबई, दिल्ली एंड केटरिंग टू द किड्स एंड फैमिली ऑडियंसेस। तो वहीं स्मॉल सिनेमाज ने रिसीव करा था एवरेज रिस्पांस में सच एज 50 to 70% का। दो फिल्म ओपन टू एन एवरेज रिस्पांस नेक्स्ट 2 डेज जो है हाई जंप के रहे कलेक्शन में, पावर पैक रहा था। तो वहीं रिलीज ऑफ स्पाइडरमैन 3 caused a drop in collections, but the film has continued to do well in Mumbai and Delhi. 9th हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म रही थी 2007 की with the box office figures of 362 millions. एंड मोर ओवर रिसेप्शन की बात की जाए तो रॉटन टोमेटोज ने फिल्म को अप्रूवल रेटिंग दी थी 50% जो कि बेस्ड थी 8 क्रिटिक्स रिव्यूज़ पर। तो वहीं तरण आदर्श जो कि indiafm.com से थे, उन्होंने फिल्म को रेटिंग दी थी 3.5 की आउट ऑफ 5 बाय praised the performance of Khan and Mukherjee, saying Khan is extremely likable and he conveys the varied emotions with complete understanding. तो वहीं मुखर्जी enacts the role of the mother wife proficiently और साथ ही साथ इंस्पायर्ड रही थी फिल्म बाय डेज ऑफ थंडर से जो कि 1990 में रिलीज़ हुई थी एंड Talladega Nights, The Ballad of Ricky Bobby 2006, though film critics that was Rajiv Masand pointed out that the pilot has been borrowed generously from films such as Cinderella Man, In America, Life is Beautiful जैसी फिल्म से अवार्ड विनिंग फिल्म रही, जिसमें कि सबसे फेवरेट कॉन अवार्ड्स विन करा था रानी मुखर्जी ने। बात करते हैं फिल्म से जुड़े कुछ और फैक्ट सच एज म्यूज़िक की। तो म्यूज़िक जो कि कंडक्ट करा गया था बाय डुओ विशाल शेखर एंड जावेद अख्तर ने लिरिक्स लिखे थे एंड साउंड ट्रैक ऑफ द फिल्म कंटेन्स 7 सॉन्ग्स जैसे अकॉर्डिंग टू इंडियन ट्रेड वेबसाइट बॉक्स ऑफिस की तरफ साथ अराउंड 10 लाख यूनिट सोल्ड हुई थी। तो वहीं साउंड ट्रैक वॉज द ईयर्स 15th हाईएस्ट ग्रॉसिंग सेलिंग साउंड ट्रैक। सॉन्ग्स सच एज अब तो फॉर एवर, हे शोना, तारारंपम वर्जन 1, नचले वे और तारारंपम वर्जन हैप्पी, सैया वे तारारंपम वर्जन 2 सॉन्ग्स रहे हिंदी में जिसके सिंगर्स रहे के विशाल ददलानी, श्रेया घोषाल, शान, सुनिधि चौहान, महालक्ष्मी अय्यर और सोनू निगम, सौम्या, राहु
सिंगर्स रहे, तो वही तेलुगु साउंड ट्रैक भी रहा है फिल्म का विद द सेम कुछ डिफरेंट रहे सच एज तारमपम हैप्पी वर्जन, हे शोना और तारमपम फीमेल वर्जन तो हिंदी के बराबर रहा, वेयर एज डिफरेंट वर्ड चिंदोले, नाथो, फॉरएवर, विनु, कोरा जो कि डिफरेंट सॉन्ग्स रहे थे। बात करते हैं फिल्म के किरदारों की, कास्टिंग की, तो सैफ अली खान जो कि किरदार निभा रहे थे फिल्म में आरवी यानी कि राजवीर सिंह का एक रेसर का। रानी मुखर्जी नज़र आई थी राधिका बनर्जी के किरदार में, रवि खोटे एज पांड्या, एंजेलिना इडनानी एज प्रिया सिंह, अली हाजी एज चैम्प, जावेद जाफरी एज हैरी, भरत दबोलकर एज बिल्ली भाटिया, सुजोय घोष एज छट्टो, रोनबीर लहरी एज पिंडी, विक्टर बैनर्जी एज सुबह शेखर राय, श्रुति सेठ एज साशा, डॉली बिंद्रा एज मिसेस पांड्या और केन थॉमसन रहे एज रस्टी फिंगलस्टन के किरदार में। दोस्तों चलिए बढ़ते हैं फिल्म के सॉन्ग यानी कि साउंड ट्रैक की तरफ। टाइटल सॉन्ग जो था असली हिप हॉप के लिरिक्स लिखे थे स्पिट फायर ने और म्यूज़िक भी स्पिट फायर का ही था, बल्कि सिंगर रहे थे रणवीर सिंह एंड मेरी गली में ये लिरिक्स लिखे थे डिवाइन और साथ ही में नेजी ने। म्यूज़िक भी रहा था डिवाइन नेजी दोनों का, साथ में ही सेस ऑन द बीट का भी। तो वही सिंगर्स की बात की जाए तो रणवीर सिंह सिंगर रहे, साथ में डिवाइन और नेजी। देखा तो लिरिक्स, म्यूज़िक और सिंगर तीनों ही किरदार यानी कि तीनों ही रोल निभाए थे डिवाइन और नेजी ने।
दूरी पोयम लिरिक्स लिखे थे जावेद अख्तर ने, म्यूज़िक दिया था ऋषि रिच ने। तो वहीं सिंगर रहे थे रणवीर सिंह एंड दूरी के लिरिक्स थे जावेद अख्तर। दूरी पोएम और दूरी दोनों के ही लिरिक्स दिए थे जावेद अख्तर ने, लेकिन दूरी में साथ में लिरिक्स रहे थे डिवाइन के। तो वहीं म्यूज़िक रहा था ऋषि रिच का और सिंगर रहे थे रणवीर सिंह। ट्रेन सॉन्ग का लिरिक्स था जावेद अख्तर, कर्श काले, गौरव रायना और तपन राज की। म्यूज़िक दिया था मिडिवियल पंडित्स, कर्श काले और रघु दीक्षित ने। तो वहीं सिंगर्स भी रहे थे रघु दीक्षित और साथ ही में कर्श काले। जिंगोस्टन बिग बॉस बीट बॉक्स के लिरिक्स दिए थे डब शर्मा। तो वहीं म्यूज़िक भी डब शर्मा का था और सिंगर भी डब शर्मा ही रहे थे। शेर आया शेर के लिरिक्स दिए डिवाइन ने, म्यूज़िक दिया था चंद्रशेखर कुंदर ने। तो वहीं सिंगर रहे थे डिवाइन। जहां तू चला के लिरिक्स दिए आदित्य शर्मा, म्यूज़िक दिया था जसलीन रॉयल और सिंगर भी रहे थे म्यूज़िक के साथ साथ जसलीन रॉयल। आज़ादी के लिरिक्स लिखे थे डिवाइन और डब शर्मा। लिरिक्स के साथ साथ म्यूज़िक और सिंगर भी डिवाइन और डब शर्मा ही रहे हैं। कब से कब तक के लिरिक्स लिखे काम भारी अंकुर तिवारी ने। तो वहीं लिरिक्स के साथ म्यूज़िक भी अंकुर तिवारी ने ही दिया था, साथ ही में कर्श काले। म्यूज़िक तो हमने जाना ही, सिंगर रहे रणवीर सिंह और विभा सराफ। तो वही काम भारी के लिरिक्स भी काम भारी ने ही दिए थे, सॉन्ग एज पर अपने टाइटल पे ही दिया उन्होंने। तो वहीं म्यूज़िक दिया था अंकुर तिवारी और काम भारी ने, म्यूज़िक के साथ साथ सिंगर भी काम भारी ही रहे। एक ही रास्ता के लिरिक्स दिए थे जावेद अख्तर ने, म्यूज़िक दिया था ऋषि रिच ने। तो सिंगर रहे थे रणवीर सिंह। अपना टाइम आएगा के लिरिक्स दिए डिवाइन और अंकुर तिवारी ने, म्यूज़िक दिया था डब शर्मा ने और साथ ही में डिवाइन ने। सिंगर रहे रणवीर सिंह और डिवाइन। जीने में आया मज़ा के लिरिक्स दिए अंकुर तिवारी, साथ ही में म्यूज़िक भी अंकुर तिवारी का ही रहा था, लेकिन साथ में म्यूज़िक दिया था मिके मैकक्लेरी ने और सिंगर रहे अंकुर तिवारी। हर घर में इस मनी खुशी है, लिरिक्स दिए इश्क बैक्टर ने, म्यूज़िक भी इश्क बैक्टर ही रहा था। सॉरी, लिरिक्स थे एस के और म्यूज़िक था इश्क बैक्टर और साथ ही में सिंगर भी एस और इश्क बैक्टर देखे गए। जिंगोस्तान के लिरिक्स दिए थे डब शर्मा ने और म्यूज़िक और सिंगर भी डब शर्मा ही रहे। गोरी के लिरिक्स दिए बिंदर कानपुरी, अर्जुन ब्लिट्स और देसी माँ ने। तो वहीं म्यूज़िक था प्रेम और हरदीप का, सिंगर रहे काका भैया वाला, अर्जुन ब्लिट्स एंड देसी माँ। इंडिया नंबर 1 के लिरिक्स दिए थे मैक अल्ताफ और साथ ही में MC टॉडफोर्ड, 100 RBH महारिया, नॉक्सियस डी और MC मवाली के लिरिक्स दिए थे। तो वहीं म्यूज़िक दिया था विवेक राजागोपालन, अक्षय धवन ने। सिंगर्स की बात की जाए तो MC अल्ताफ, MC टॉडफोर्ड, 100 RBH महारिया, नॉक्सियस डी सिंगर्स रहे। दोस्तों, जैसे कि हमने फिल्म के म्यूज़िक के बारे में जाना है, सबसे लंबी सबसे एक्सटेंडेड साउंड ट्रैकिंग और लिरिसिस्ट फिल्म में देखी गई है। अप्रॉक्सीमेट 18 गाने रहे हैं फिल्म में और सभी जो है हिट भी रहे हैं ऑलमोस्ट।
बात की जाए फिल्म से रिलेटेड कुछ और फैक्ट्स like film was confirmed to be released on 14th Feb 2019 by Alia Bhatt. The first look officially poster of the film was released on 1st January 2019 and reconfirmed the release date to be 14 February 2019. दो न्यू थ्योरेटिकल पोस्टर्स रिवील हुए थे यानी कि रिवीलिंग लुक्स देखे गए थे लीड एक्टर्स के फिल्म के जो अनवेल हुए थे फॉर द पब्लिक ऑन 2nd January 2019. Film was selected in Berlin special section of 69th Berlin International Film Festival. The film was screened on 9th February 2019 for its world premiere at the festival. Released in India on 14th Feb 2019 और रिलीज हुई थी 3,350 स्क्रीन्स पे एंड ओवरसीज मार्केट ऑन 751 स्क्रीन्स with worldwide count of 4,101 screens. कुछ राइटर्स ने स्पेकुलेट करा था अबाउट सिमिलैरिटीज बिटवीन गली बॉय एंड द एमिनेम starring 8 Mile 2002 में writer Aditya Mangal in the quint called though appreciating the movie as entertaining after outlining what he considers the many similarities. An engineered Indianized version of 8 Mile, journalist Rachna Tyagi of the Week was more harsh while rating 2.5 out of 5 and calling it a copycat Indian version. When denying the claims, director Zoya Akhtar responded, I got it, the comparison, I totally understand it because that's the reference point and that's what they've seen. So, that's the immediate reference point and the people here just love to do that. उनका रिवर्ट रहा है तो वहीं होम वीडियो की कंपैरेटिव की बात की जाए तो मेड अवेलेबल ऑन VOD ऑन Amazon Prime Video on 16th April 2019. क्रिटिकल रिस्पॉन्स मिला है फिल्म को while receiving positive reviews from the critics which praised directed to Akhtar's direction, Maurya's dialogue and Singh Chaturvedi and Bhatt for their performance. तो वहीं Rotten Tomatoes में film has scored a 95% based on 21 reviews with an average rating of 7.3 out of 10 रेटिंग रही है फिल्म की तो वहीं अन्ना वेटिकार्ड ऑफ फर्स्ट पोस्ट ने फिल्म गली बॉयज को दिए हैं 4 stars out of 5 while writing Ranveer Singh and Alia Bhatt are devastatingly good in Zoya Akhtar's ultimate anthem for the rebel. The way Raja Sen of Hindustan Times called it the first great हिंदी फिल्म ऑफ 2019 तो वहीं तरुण आदर्श जो कि बॉलीवुड हंगामा से रहे हैं ही कॉल्ड इट अख्तर्स बेस्ट फिल्म टू डेट रचित गुप्ता of the Times of India also gave 4 stars and Sukanya Verma of Rediff.com gave also 4 stars. So when Liv Mint wrote its hard-won transformation, बहुत hard and it rings true. Anupama Chopra commented by the end, I was wiping tears and cheering furiously not just of for Murad but for each one of these characters to find happiness. Saibal Chatterjee of NDTV opened Gully Boy can be wholeheartedly commended for its craft, fascinating characters, and Ranveer Singh absolutely kills the slow burning rapper act. What's more, he does with a lot of energy to spare. तो वहीं फिल्म के लिए लिखते वक्त कंपेनियन भाग
Bharadwaj Rangan gave Gully Boy 3 stars out of 5 and found it to be the softer than expected but hugely entertaining and beautifully made. तो वहीं अनन्या भट्टाचार्य जो कि इंडिया टुडे की रही हैं रेटेड इट 3 stars out of 5। मयूर सनब जो कि डेक्कन क्रॉनिकल के थे उन्होंने भी 3 stars दिए हैं। तो वहीं द वायर फेल्ट द फिल्म डेल्ट विद बॉलीवुड ट्रूप्स। जानते हैं कुछ और फीडबैक्स की लाइक मंजूषा राधाकृष्णन ऑफ गल्फ न्यूज़ ने रेट करा था 4 out of 5 while writing when he breaks down you break down with him and that's one of the biggest victories of Gully Boy. Among international reviewers, Lee Marshall of Screen International wrote, Singh burst rhymes with the best of them in this energetic, entertaining film. Peter Bradshaw of The Guardian gave the film 3 out of 5, and Deborah Young of The Hollywood Reporter commended Akhtar for her direction. Anita Ayer of Khalij Times rated the film 4 out of 5. Taween J. Westberg of Variety wrote, Zoya Akhtar's most accomplished film to date is a mainstream rap musical about the Muslim guy from working class Mumbai determined to break free from the strictures of expectation and class, all served up with generous helpings of deftly written hip hop lyrics and a largely well-woven narrative starring Ranveer Singh in all his charms. Raja Sen of NETV gave the film 4 stars out of 5 and said Zoya Akhtar's Gully Boy and underdog story shining a light on India's incipient hip-hop subculture is the first great Hindi film of 2019 and a rousing celebration of sprung. The writing is enthralling, the texture fantastic, and this world is revelation. Here are characters without room to breathe who express themselves breathlessly through a style of music that has always belonged to the marginalized descent finds a way and a beat. जानते हैं फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। फर्स्ट डे फिल्म ने कलेक्शन करा था 194 मिलियन का जो कि यूएस डॉलर में था 2.7 मिलियन। On its first day, in 2 weeks of release, the film grossed 2.2 billion. As per US dollar, it was 31 million. Film grossed 1.66 billion in India and 9.6 million overseas, taking its worldwide gross to 2.38 billion. And as per 2019, it was ninth highest grossing film of Bollywood worldwide. तो दोस्तों जानते हैं फिल्म में ऐसा क्या रहा जिसकी वजह से फिल्म वन ऑफ द मोस्ट एंटरटेनिंग और मोस्ट फेवरेबल फिल्म रही है 2019 की और रिकॉर्ड ब्रेक करा है अवार्ड्स के एस्पेक्ट पे। जानते हैं फिल्म के बारे में, फिल्म की स्टोरी लाइन के बारे में। मुराद अहमद, अ फाइनल ईयर स्टूडेंट इन कॉलेज, lives in the Dharavi slums of Mumbai. His abusive father, Shakib Ahmed, brings home a much younger second wife, much to chagrin of the family. Murad nurtures a fascination for rap music. His long-time and overtly possessive girlfriend, Safina Firdausi, is training to be a surgeon and routinely meets him in secret.
Forced to work part time as a chauffeur after Aftab is injured, Murad starts to write with his lyrics, informed by the inequalities he observes while on the job, making the acquaintance of local rapper Shrikant MC Sher Bhosle, whom he saw performing in his college fest. He is drawn into performing his lyrics at underground shows and rap battles and eventually uploading a video on YouTube. Berkeley College student Shweta Sky Mehta, an involving musician, reaches out to Murad and Sher after seeing the video, offering to collaborate on a new song. The accompanying video, which is shot in Dharavi, rapidly becomes popular. Murad shares an intimate moment with Sky, later lying to Safina about it. When Safina finds out, she reacts violently towards Sky by smashing a bottle of beer on her head. As a result, she is brought in by the police but is not arrested as Sky doesn't press charges against her. Murad eventually breaks up with Safina due to her possessive attitude. As Aftab violence towards him, his brother Suhail and his mother Razia escalates. Murad decides to leave home with Razia and Suhail and work full time for his maternal uncle Atiq Khan. Later, when Sky expresses her romance feeling for him, Murad declines her advances as he still loves Safina and decides to reconcile with her. Murad and Sher enter a contest to open for Nas at his Mumbai concert, and Murad advances to the finals after a successful rap battle. Murad's confidence grows from interacting with rap fans, appreciation of his performances, and he finally stands up to Aftab and Atiq when they belittle his passion. He later gets back together with Safina. He goes on to win the contest and becomes one of India's top rappers. The film ends with his friends, family, and Safina watching him happily as he begins his triumphant opening performance. तो दोस्तों, जैसे कि हमने फिल्म की स्टोरी लाइन से पता चला कि फिल्म एक स्लम बेस्ड रही है जिसमें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगलिंग है और काफ़ी इनइक्वालिटीज़ बेस्ड फिल्म रही है। दिखाई गई है इनइक्वालिटीज़ की किस तरीके से देखा जाता है स्लम को और क्या रिएक्शन रहता है कि अगर एक स्लम का बच्चा किसी बाहर किसी कंपनी या फिर किसी जॉब के लिए निकलता है, किस नज़रिए से उसे देखा जाता है। जो भी एक्सपीरियंस करा मुराद ने, उस सब पे उसने एक रैप लिखा और काफ़ी अच्छे से एक सक्सेसफुल रैपर बना है। हालांकि फिल्म में इंटीमेसी भी देखी गई है। तो चलिए जानते हैं फिल्म से जुड़े स्टार कास्ट के बारे में, उनके करियर के बारे में इन द फिल्म इंडस्ट्री। तो जानते हैं रणवीर सिंह देखे गए फिल्म में एज मुराद अहमद यानी कि गली बॉय के किरदार में। आलिया भट्ट रही थी सफीना फिरदौसी जो कि मुराद की पॉजेसिव गर्लफ्रेंड का किरदार निभाया था। सिद्धांत चतुर्वेदी रहे एज श्रीकांत भोसले यानी कि MC शेर के किरदार में। विजय रियाज एज आफ्ताब अहमद यानी कि रणवीर सिंह के फादर के किरदार में देखे गए थे। विजय वर्मा एज मोइन आरिफ, अमृता सुभाष एज रजिया अहमद, इखलाक खान एज नाज़ीर फिरदौसी यानी कि सफ़ीना के फादर देखे गए। शिबा चड्डा एज हमीदा फिरदौसी आलिया भट्ट के मदर के किरदार में रही थी। कल्कि कोचलिन एज श्वेता यानी कि स्काई, अयान जुबैर रहमानी एज सफ़ीनाज ब्रदर,
Rahul Piske as Chintu, Jyoti Subhash as Dadi, Nakul Roshan Sehdev as Salman, Shruti Chauhan as Maya, विजय मौर्य एज अतीक खान जो मुराद के अंकल के किरदार में देखे गए थे, सृष्टि श्रीवास्तव एज अल्बीना दादरकर, मलिका सिंह एज सुहानी, टीना भाटिया एज परवीन, राहिल गिलानी एज ऋषि, सवार काम्बले एज सुहेल, चैतन्य शर्मा as MC Checkmate, Jasleen Royal as Juhi, Michaela Tanwar as Gemma, Kubra Said as Scarlett, Shah Rule as himself, Manch Musique as Rap Battle Judge, Krishna as himself, Umi Kashyap as Driver, राजा कुमारी एज रैप बैटल जज, बॉबी फ्रिक्शन भी एज रैप बैटल जज रहे थे, एमीवे डिवाइन एंड ब्रदर वी एज देमसेल्व्स देखे गए हैं फिल्म में। तो दोस्तों जानते हैं रणवीर सिंह यानी कि मुराद अहमद के बारे में, उनके करियर के बारे में कि कैसा उनका करियर का स्टार्टअप रहा और कहाँ वो स्टैंड करते हैं अब। ही इज़ एन इंडियन एक्टर हु इज़ नोन फॉर हिज वर्क इन हिंदी फिल्म्स, रेसिपिएंट है काफ़ी सारे अवार्ड्स के इंक्लूडिंग 4 फिल्म फेयर अवार्ड। ही इज़ अमंग द हाईएस्ट पेड इंडियन एक्टर एंड हैज़ बीन फीचर्ड इन फोर्ब्स इंडिया सेलिब्रिटी 100 list since 2012. After completing his bachelor's degree from Indiana University, Bloomington, he returned to India to pursue an acting career in film. Briefly worked in advertising and made his acting debut in 2010 with a leading role in Yash Raj's romantic comedy film Band Baja Barat. The film emerged as a critical and commercial success, earning him the Filmfare Award for Best Male Debut, gained praise for playing Melchonic Thief in the drama Lutera in 2013, and established himself with his collaborations with Sanjay Leela Bhansali, beginning with the romance film Golio Ki Ram Leela in 2013. He also gained critical acclaim for portraying Bajirao I and Alauddin Khilji in Bhansali's period dramas Bajirao Mastani 2015 and Padmavat in 2018, जिसमें कि बाजीराव का किरदार उन्होंने निभाया था बाजीराव मस्तानी 2015 में, और पद्मावत में उन्होंने किरदार निभाया था अलाउद्दीन खिलजी का। He won the Filmfare Award for Best Actor for the former and Filmfare Critics Award for Best Actor for the latter. Along with action film Simha of 2018, in which he played the title character, ranked among the highest grossing Indian films. He won another Filmfare Award for Best Actor for playing an aspiring rapper in Zoya Akhtar's musical drama film Gully Boy in 2009. Married to his frequent co-star Deepika Padukone, करियर की बात की जाए तो उनका फिल्म डेब्यू और ब्रेक थ्रू देखा गया है 2010 से 2014 के बीच, जिसमें कि जनवरी 2010 में सिंह was called for an audition by Shanu Sharma, the head of casting division of Yash Raj's films. They informed him that it was for a lead role in their title film Band Baja Barat, a romantic comedy set in the world of wedding planning.
तो वहीं आदित्य चोपड़ा, the vice president of the company, later saw the audition tapes on video and was impressed by Singh's acting and decided that he fit the part of Bittu Sharma, the hero of the film. However, writer-director Manish Sharma needed some more convincing and he was called for a few more auditions over the next 2 weeks until the three were completely convinced of his caliber. After the 2 weeks of testing, Singh was confirmed by the role of Bittu with Anushka Sharma playing the female lead and Singh described the role of Bittu Sharma as a typical Delhi boy. To prepare for the role, he spent time with students at the Delhi University campus. Prior to the release of the film, trade analysts were skeptical of the film's commercial potential, citing the middling response to Yash Raj's films' last few productions, the lack of a male star, and the fact that the female lead Anushka Sharma was by then an almost forgotten actress. However, Band Baja Bharat went on to become a sleeper hit. Singh's portrayal of Bittu was praised with Anupama Chopra of NDTV writing that Singh was pitch perfect in the role of the uncouth but good-hearted small-town slacker who is a bit of a duffer when it comes to matters of the heart. The film earned approximately 214 million at the domestic box office at the 56th Filmfare Awards. तो वहीं सिंह won the Best Male Debut for the film. बैंड बाजा बारात के फॉलोइंग में रणवीर सिंह ने साइन करा था फॉर लेडीज वर्सेस रिकी बहल जो कि एक रोमांटिक कॉमेडी थी प्रोड्यूस्ड बाय चोपड़ा एंड डायरेक्टेड बाय मनीष शर्मा. He played a conman Ricky Behl who cons girls for a living but finally meets his match. The film co-starred Anushka Sharma, Pariniti Chopra, Dipanita Sharma and Aditi Sharma. According to Singh, the title character had various avatars in the film, जिसमें कि कैरेक्टर रहा था चर्पी, एंटरटेनिंग एंड अ सिनिस्टर साइड. The way Nikhil Kazmi of the Times of India wrote, Ranveer is well Ranveer, your average Joe kind of hero who looks convincing enough as Sunny, Devin, Iqbal, Vicky, his sundry avatars. Commercially earned करा था फिल्म ने 370 million domestically. He found rave acclaim coming his way with Vikramaditya Motwane's period romance Lutera in 2013, co-starring Sonakshi Sinha, an adaptation of O. Henry's short story The Last Leaf. The film tells the story of Paki Roy Chaudhary, a young Bengali woman who falls in love with Varun Srivastava, a conman posing as an archaeologist, जिसके लिए राजीव मसान of CNN IBN wrote that Singh brings a quiet sensitivity to Varun and occasionally a smoldering intensity. Offering a finely internalized performance, he leaves a lasting impression. Lutera unperformed commercially at the box office. हालांकि and बात की जाए उनके established as an established actor की तो जोया अख्तर ensemble comedy drama दिल धड़कने दो in 2015 produced by and cameo starring her brother Farhan Akhtar featured featured Singh alongside Anil Kapoor, Shefali Shah, Priyanka Chopra as a younger sibling of a dysfunctional Punjabi business family who aspires to become a pilot. Writing for Mumbai Mirror, Kunal Guha
found Singh to be the surprise element of the film. He praised his immaculate comic timing and took note of his subtlety. Commercially, the film underperformed. He next reunited with Bansali in the period romance Bajirao Mastani, opposite Padukone and Chopra. He portrayed Bajirao first, for which he shaved his head, and to prepare, he locked himself in a hotel room for 21 days. Raja Sen wrote that Singh brings his character to life and does so with both machismo and grace, and commended him for his perfecting his character's guide and asset. The film earned 3.5 billion to become one of the highest grossing Indian films and got Singh the Filmfare Award for Best Actor.